Hello student, today I will explain to you simple compound and complex sentence. The first is simple sentence. The first question it will come in your mind, that is, what is a simple sentence? Simple sentence contains a subject and a predicate and it expresses a complete thoughts. सिंपल सेंटेंस क्या है? एक सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो, एक वर्ब हो, वो एक सिंपल सेंटेंस कहलाता है. अ सिंपल सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. आपको पहले से पता है, मैं पहले भी जब ग्रामर का वीडियो पोस्ट की थी, आई टोल्ड यू दैट इंडिपेंडेंस क्लॉज a sentence which is not dependent on any other sentence or group of word, that is called independent clause. तो एक simple sentence जो होता है वो independent clause भी होता है. For example, you say here, the boys went to the park. In this sentence you find that the boys is subject, went is verb, means main verb, to the park is the predicate. तो ये क्या हुआ? ये एक सिंपल सेंटेंस हुआ. और नेक्स्ट एग्जांपल यू से, जेम्स एट द एवोकाडो वेरी फास्ट. हियर जेम्स एट, इट इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज. हाउ? अब अगर आपको आप बोले कि आई एट, तो ये कंप्लीट सेंस निकल रहा है. कैसे? मैंने खाना खा ली. ये किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है क्या? नहीं है ना. तो दैट्स व्हाई जेम्स एट मीन्स जेम्स ने खाना खा लिया. तो ये इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स. दैट्स व्हाई जेम्स एट इज ए इंडिपेंडेंट क्लॉज. द जेम्स एट व्हाट? You will get the answer of what? That is the avocado. That's why the avocado is object. Very fast mean in what manner it is very fast. It is not necessary in a simple sentence, although it is added in this sentence. So that's why James ate the avocado very fast. It is a simple sentence. Now compound sentence. Compound sentence contains two independent clauses that are simple sentences joined by a coordinating conjunction. You know conjunction is and, or, nor. These are the conjunction. Conjunction क्या है? The word which join two sentences, that word is called conjunction. और इधर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. तो जनरली छोटे सेंटेंस को छोड़ के बड़े सेंटेंसेस में जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनको कॉमा के थ्रू अलग किया जाता है. फॉर एग्जांपल, यू विल फाइंड हियर, the dancer felt dizzy, so she didn't go on stage. Here the dancer felt dizzy, it is independent clause क्योंकि ये किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है. मीन्स डांसर को चक्कर आया था, तो ये किसी और पर डिपेंड नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. शी डिडंट गो ऑन स्टेज, यू विल फाइंड हियर आल्सो, वो स्टेज पर नहीं गई. दैट इज आल्सो, इट इज आल्सो नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी sentence or group of words. That's why both are the independent clause, and both clauses are joined by the coordinating conjunction. So that's why it is the compound sentence. Here also you will find that after it is a comma is here, so it is a compound sentence. Okay, now complex sentence. A complex sentence has an independent clause and at least one dependent clause. Dependent clause, the clause
which is generally dependent on main clause or independent clause, that is called dependent clause. For example, here you say, when the cake is brown. When the cake is brown, then what? Is it independent? No. जब केक जो ब्राउन हुआ, जब केक ब्राउन हुआ तो क्या? तो that's why it is not independent, it is dependent clause. Take it out the oven. इसे ओवन से निकालो. आपको इधर क्या लग रहा है? ये एज ए ऑर्डर लग रहा है ना? तो बट इट इज कंप्लीट सेंटेंस. So that's why it is independent clause. But when you join these two clauses, when the cake is brown, then comma, take it out the oven. तो जब इनको join किया गया तो आप देखिए ये एज ए ऑर्डर की जगह एज ए एडवाइस लग रहा है ना? तो that's why it is a complex sentence. Now next example is evergreen trees are a symbol of fertility. अब देखिए एवरग्रीन ट्री किसका सिंबल है? फर्टिलिटी के. इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है. ये किसी दूसरे सेंटेंस या वर्ड के ग्रुप पर डिपेंडेंट नहीं है. दैट्स व्हाई एवरग्रीन ट्रीज आर ए सिंबल ऑफ फर्टिलिटी इज द main clause or independent clause. And next is because they do not die in the winter. They do not die in the, because they do not die in the winter. तो कौन विंटर में डाई नहीं होता? कौन who they do not die in the winter. Who do not die in the winter? So that's why it is dependent on evergreen forest are a symbol of fertility. That's why they do not die in the winter is the dependent clause. So when we join it by because, तो sentence क्या होगा? Evergreen trees are a symbol of fertility because they do not die in the winter. It is a complete sentence and it is a complex sentence. Okay student, now I think you have understood simple, complex and compound sentence.